Welcome back everyone. Now, best wishes for your coming board exams. As I told, AT sir is always with the students. Earlier already I have given you the most important sure shot questions for coming board exam on 21st Feb 2025. Now the most important topic wise theorems, how to write the proof, because as per the board rules 15% questions will be theory based. So now topic wise क्या होता है, स्टूडेंट उल्टा सुल्टा प्रूफ लिखते हैं, then they will not get full marks in board exam. How to write the proof perfectly in board exam to get full marks, because theorem की guarantee, sums की no guarantee. But अगर 80 सर ने दिया तो येणार म्हणजे येणार. So now look, the topic is pair of straight line. The weightage is 6 marks for board exam. तो बेटा मोस्टली एक थ्योरम कंफर्म आता है. ये चैप्टर में दो ही थ्योरम है. एक ये पहला, acute angle theta between the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by is equal to 0 is given by tan theta 2 root h square minus a upon a plus b. If a plus b not equal to 0, but if a plus b is 0 means theta is 90 degree or the lines are perpendicular. Now the proof. Now solution or the proof, it will start like this. Let m1 and m2 be the slopes of lines represented by ax square 2hxy plus by square equal to 0. So now you know the auxiliary equation in terms of slope. Therefore we have these two important relation, m1 plus m2 minus 2h upon b and m1 into m2 a upon b. Here one will get 1 mark. The theorem mostly come for 3 marks or sometimes 4 marks, and it came more than 20 times in board exams. Very important theorem. तो पहले ये दो स्टेप लिखना है बेटा. इसको call at 1, call this as 2. Now we have to derive this relation. So now we know that from 11th standard mathematics straight line, acute angle theta between the line is given by tan theta mod m1 minus m2 1 plus m1 m2. तो पहले if lines are perpendicular, then we know what we know, m1 m2 minus 1. Therefore from 2 what we have, a upon b equal to minus 1, which implies a equal to minus b, which further implies a plus b equal to 0. Hence this part will give you 1 mark. So if a plus b equal to 0, lines are perpendicular. So we assume, suppose a plus b is not equal to 0. Suppose a plus b not equal to 0. Now we want the acute angle theta. So recall the formula that you have studied in straight line. Tan theta mod m1 minus m2 1 plus m1 m2. तो m1 m2 का वैल्यू हमें मालूम है. अब m1 minus m2 नहीं है, बट हमें m1 plus m2 मालूम है. तो रिकॉल व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमें a plus b का वैल्यू मालूम है और a minus b निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी a minus b square a plus b the whole square plus 4ab, राइट. तो बेटा यहाँ पे भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो लो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है हमें. m1 minus m2 the whole square is equal to m1 plus m2 the whole square minus 4 m1 m2, ऐसे. और उल्टा अगर m1 plus m2 the whole square चाहिए तो m1 minus m2 the whole square plus 4 m1 m2. तो अब m1 plus m2 we know that minus 2h upon b the whole square. m1 m2 कितना है, a upon b. यहाँ पे लिखना है from 1
बोर्ड्स में बेटा एक एक स्टेप प्रॉपरली. एवरी टाइम माई नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर गेट 100 आउट ऑफ 100. 99 तो कितने लोगों को रहता है? एंड जिनको मैंने पढ़ाया दे नो. 80 सर ने बोला येणार म्हणजे येणार, लिखा मतलब लिखा. तो नाउ we have m1 minus m2 the whole square is equal to 4h square upon b square, 4a upon b. Taking the LCM, m1 minus m2 the whole square, 4h square minus 4ab upon b square. Taking square root, m1 minus m2 plus minus 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 हो जाएगा, रूट h square minus ab upon b. So now, look, all these lectures are only for my students so that they score full marks. Physically I am not present with you, but then these lectures will help you to have your preparation up to the mark. So now m1 minus m2 plus minus 2 root h square minus ab upon b. तो अब फॉर्मूला लिखना है बेटा, tan थीटा is equal to mod m1 minus m2 1 plus m1 m2. यहाँ पे एक मार्क मिल जाएगा आपको करेक्ट फॉर्मूला लिखने पे. तो अब मैथ्स में 1 मार्क होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पर्टिकुलर स्टेप को हाफ मार्क होता है, बट मैथ्स में 1 मार्क होता है. तो ये थ्योरम मोस्टली 4 मार्क्स के रहते हैं, कभी 3 मार्क्स के रहते हैं. तो अब यहाँ पे हमने वो वैल्यूज पुट करना है. तो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट है वैल्यू. तो मॉड में बेटा प्लस माइनस विल बिकम प्लस ओनली, 2 रूट h square minus ab by b upon 1 plus m1 m2, that is 1 plus a by b. Tan theta is equal to 2 root h square minus ab by b, a plus b by b, b cut b cut upon a plus b, provided a plus b not equal to 0. Hence proved, and you get full 4 marks or 3 marks as it will come in board exam. Now there is one more theorem. ये दो में से एक theorem येणार म्हणजे येणार. और सम्स ऑलरेडी मैंने बोला है, वो प्रिपरेशन हो गया है. इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट theorem लिखना कैसे है? Now keep watching. My videos will come daily now. Yes, that will help you boost your preparation. Mission 99, CT, JE and boards. Okay, so now second theorem will come soon. तब तक प्रिपेयर कर लो बेटा, और हो सके तो लिख के दिखा देना मुझे. नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव माय नंबर्स, यू कैन शो मी. ओके, बाय एवरीवन, बाय.